हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लेंस इक्वेशन। सो सो टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इस चैप्टर में हमने पढ़े। एक हमने कहा था कि एक मिरर होता है और दूसरा जो होता है वो लेंस होता है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है कि मिरर का जो one side होता है that is coated with silver, but for lens it is purely transparent और इसमें रिफ्लेक्शन होती है, refraction. So light will pass through this. However, for mirror there will be reflection. ये दो बेसिक चीज़ें थी। इस लेक्चर में आई वुड लाइक टू फोकस ऑन लेंस और लेंस के जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है between the object distance, image distance, and its focal length। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक इट्स रे डायग्राम। और अगर मैं एक लेंस ड्रॉ करूँ, so if I make a small lens and that is a lens, and if I draw more components of it, which will be its principal axis, ओके। और यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, ओके, सो एक रे इसके बिल्कुल सेंटर से जाएगा and that will be like and let me choose other color। so एक रे जो होगा बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगा like this, and this incident angle theta will be equal to the angle of refraction, assuming कि जो लेंस की थिकनेस है that is very small compared to its diameter। That's the condition for this theta 1 is equal to theta 1 1। The other ray which will pass parallel to the principal axis will hit the lens at this point, but then it will be diverted with certain angle, and it will pass through the focal point which is F, and it will meet the first ray at this point। एज a result हमारे पास यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा। सो हमारे पास एक इमेज बन गया। दिस इज़
object, this is lens, and this is image. Okay, so इस तरह की हमारे पास यहाँ पे डायग्राम आएगी, और in this case the diagram is made after the focal length. और इसमें मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं, नंबर वन इज़ एफ, इट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. फोकल लेंथ वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारे रेस कन्वर्ज करेंगे, विच इज़ दिस पॉइंट. और लेंस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा एफ. सो फोकल लेंथ. The other distance will be the object of the distance of object from the lens, which will be do, where O stand for object. Third जो हम use करेंगे, that will be di, which is the distance of image, and this distance is gonna be this one. So the distance of image from the object. Now there are some other terminologies that we will also consider for the size of image, which is height of image hi, and the other one for the object, which is height of object. Okay, so hi, ho. Now these are the terminologies that we are gonna use. So first आप लोगों ने इस चीज़ों को याद करना है. Now if I look at these triangles, मैं okay, मैं इस triangle को highlight करता हूँ. But before that I'm gonna copy this figure. I'm gonna copy this. Okay. Oops. Okay, so here I have everything in this figure, but in this figure 1 I would call it figure 1, and this is my figure 2. Okay, so figure 1 में मैं आपको कहूँगा कि ये जो ट्राइंगल है, this one, and the other triangle is this one. अगर हम इन दोनों triangles को देखें तो we will see that these two triangles are similar triangle. और इसका क्या मतलब है? सिमिलर ट्राइंगल वो होती हैं, ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिसके all three angles are equal. So इनको तीनों angles equal होंगे, and I can prove it here. First of all, ये दोनों angles same है. So this angle and this angles
are the same, theta 1, theta 1 1. दोनों triangles are right angle triangle, which means that one angle is 90 and the other is also 90. और हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. So this angle should be equal to this one. I'm gonna highlight it with a black. So this angle should be equal to this angle, and this is 90 degree, which is shown here. So now since these are similar triangles, so similar triangles की एक property होती है, वो property ये है कि corresponding ratio of corresponding sides is equal. और इसका क्या मतलब है कि corresponding side, अब इन दोनों ट्राइंगल में corresponding sides क्या होंगे? I'm gonna highlight it with red. So this side is corresponding side of this triangle, this side is corresponding of this triangle, which is hypotenuse, and this side, I put 3 dashes, is corresponding side of this triangle. और इनकी रेशो हमारे पास सेम होगी. सो हम लिख सकते हैं कि this side, which is dotted with 3, divided by this side is equal to base, इनकी जो base है. So the first side is h naught divided by hi is equal to d naught, which is the distance of object from the lens, divided by mh distance. Now since we are using some conventions, I will discuss about them in the next topic, but यहाँ पे ये याद रख लो कि image चूँकि inverted है, so उनके साथ मैं negative signs लगाऊंगा. This is the convention that we use, कि अगर image सीधी हो it's positive, अगर उल्टी हो it will be negative. Now let's go back to the second image. This is my equation 1. I'll go back to this equation. Second, जो हमारे पास triangles हैं मैं उनको highlight करूँगा यहाँ पे. I'll highlight them with yellow. सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को पूरा करता हूँ. अच्छा, and I'm gonna highlight this now. This triangle and this triangle, अगर इन दोनों को हम कंसीडर करें यहाँ पे, तो these two triangles are also similar. I'll tell you how. First of all, दोनों का ये एंगल जो है 90 डिग्री है, because both are right angle triangle. So this angle is equal to this angle. So both are 90 right angle triangle. This is 90 degree. और एक और थ्योरम है that I will tell you कि अगर दो लाइन आपस में मीट करें तो जो ये दो एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, एंड सिमिलरली ये दो एंगल्स जो होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे. एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स हियर. This line is actually meeting this line
और हमारे पास ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे. Now, so these are the angles that are equal in both the triangles. Now, दो एंगल्स इक्वल हैं corresponding, so तीसरी भी इक्वल होगी because दोनों का सम 180 है. So now we proved that these two are similar triangle. Now as a result हम इनके corresponding sides की ratio भी ले सकते हैं, that will be equal. And I'm gonna write the equation, similar equation that I proved here, which is h naught divided by hi is equal to, now इस ट्राइंगल की बेस का तो हमें पता है, what is its length, it is f, और इमेज का डिस्टेंस हमें पता है यहाँ से लेंस तक कितना है, di है. So what will be this distance? This distance will be di minus f. What does it means? That मैं इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, सो इनकी corresponding sides की रेशो that will be f divided by di image minus f, or again I will use that convention, height is negative. This is my equation 2. Now I have both the equations. I will bring this equation here. Okay, so इस इक्वेशन की अगर मैं आपको कहूँ, इसको गौर से देखो तो इसके ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं, विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड. चूँकि इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे. So based on that I can write another equation which is d naught divided by di is equal to f divided by di minus f. Now if I cross multiply, next is just mathematics, which will be d naught into di minus f is equal to di into f, and d naught di minus d naught f is equal to di f. Now if I want to divide everything, d naught di f, what will happen is our equation will be like this: d naught di divided by now which things will cancel, this will be cancelled with this, d naught f will be cancelled with this, and this will be cancelled with this. फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आएगा that will be 1 divided by f minus 1 divided by di is equal to 1 divided by d naught. And what does this mean? This is the distance of
object. This is the distance of image. This is focal length. So अगर हमें फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, लेंस के, दैट विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री. सो अगर हमारे पास लेंस की ज्योमेट्री का पता हो और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता हो, हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और इसको, इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं दी लेंस इक्वेशन. So this is how we derive this equation. There is one important definition which is we define for this lens, and that is called magnification. So I will try to explain this quickly. Magnification, magnify means to enlarge. Enlarge means बड़ा करना. तो कितना एक चीज़ को हम बड़ा कर रहे हैं. So again, अगर हम पीछे इस इक्वेशन में जाए तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसकी एक ख़ास हाइट थी, और इस लेंस में से जब इससे रेज गुजरी तो इसका एक इमेज बन गया, और इमेज की भी एक ख़ास हाइट थी. तो इमेज की हाइट अगर ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि इमेज को इनलार्ज किया गया है. सो बेस्ड ऑन दिस वी क्वांटिफाई दिस टर्म called m is equal to height of image divided by height of object. So if magnification is greater than 1, that means that image size is enlarged, and I will leave up to you. If magnification is equal to 1, what does this mean? And if magnification is less than 1, what does this mean? Think about this. Now based on our previous equation, ये मैग्निफिकेशन वाले इक्वेशन को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, and we can write it because we have this equation, और इसमें exactly same चीज़ें थी, height of object divided by height of image, and this is equal to distances of object, their corresponding distances from the lens. इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज. ये हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1. सो अगर हमें ऑब्जेक्ट के साइजेस का ना पता हो, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू मेजर, राइट, आप ऑब्जेक्ट की साइज़ कैसे मेजर करोगे, कितना बड़ा है? यस, ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं, बट अगेन इमेज का कैसे मेजर करोगे? तो इट्स in practical life this measurement is impossible, but measuring the distance is possible. So instead we can calculate magnifications, because yeah, there is one I would like to talk a bit about the conventions that are generally used for lens.
So there are some conventions. So convention होती क्या है? Whenever we are going somewhere, for example आप रोड पे जा रहे हो, there is a road and you are going and you reach this point and now you have two paths. या तो आप इस साइड पे जा सकते हैं या इस साइड पे जा सकते हैं, और आपने एक रास्ता चुनना है और आपकी मर्ज़ी है कोई भी रास्ता चूज़ करें, और दोनों रास्ते आपको अपने मंजिल पे पहुंचा रहे हैं, तो आप एक रास्ता एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपनी चॉइस है, हम क्या करते हैं। जो हम एडॉप्ट करेंगे, हम सबको यही कहेंगे कि आप भी यही एडॉप्ट करें ताकि सब एक पेज पे आए, सबको पता हो एक दूसरे का कि क्या हो। तो इस तरह हम डिसीजन कर लेते हैं, ये आपस में साइंटिस्ट बैठ के करते हैं और सबको कहते हैं कि आप इस तरह फॉलो करो, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। सो ये जो डिसीजन होता है इसको हम कन्वेंशन कहते हैं। तो अगर आपने साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी के साथ बात करनी है, किसी साइंटिस्ट के साथ बात करनी है, तो आपने कन्वेंशंस सेम यूज़ करने होंगे। सो इसी तरह मिरर में भी हम कुछ कन्वेंशन यूज़ करते हैं। वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, DO. DO is positive when, of course, when the object is real. This is the same we used for mirror, but यहाँ पे object real तब बनेगा जब when it is made on the opposite side of the lens. Okay, then it will be real. दूसरा जो convention है वो है ऑब्जेक्ट इज़ रियल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रियल मीन्स कि आप कोई इमेज नहीं लगा रहे हो, आप यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट रख रहे हो। व्हेन इट इज़ रियल, आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, देन दिस डिस्टेंस DO इज़ गोना बी रियल। फिर इमेज डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज यहाँ पे बनता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस इज़ द इमेज डिस्टेंस। सो इट इज़ पॉजिटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगेन वही होता है जो अपोजिट साइड पे बनेगा लेंस के, और वो तभी बनेगा जब आप इसको किसी वॉल पे पिक्चर कर सको। ठीक है, तो प्रोजेक्टर पे हम लेंस लगाते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द वॉल, सो दैट इज़ रियल। और वर्चुअल इमेज जो होता है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये नेगेटिव होगा। दूसरा इमेज का एटीट्यूड। Image का attitude will be positive for upright and negative for inverted. इस केस में हमारे पास जो इमेज बना था that was inverted, that's why हमने यहाँ पे जो यूज़ किया था इसके साथ नेगेटिव साइन हमने लगाया था। सो या दिस इज़ अगेन द कन्वेंशन। तीसरा है फोकल लेंथ। चौथा, फोकल लेंथ, because it's a length, it is negative for
concave lenses and positive for convex. Now I would like to highlight that concave lenses, they will diverge, and convex lenses will converge. And my question to you guys is कि जो लेंस हमने अभी यूज़ किए was that convex or concave, and you have to think about this. All right. Finally, the last term that we are gonna use, I'll explain in short, is power of lens. एक पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि एक लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है. सो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. ओके, आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स. हमारे पास एक लेंस है, इसमें से अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट मैं गुजारूं, ओके, ये आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, एंड दिस इज वेयर दे आर कन्वर्ज्ड. So they are converged at a certain distance from the lens, which is called focal point. Now if I take another lens which is a bit thicker, if the same rays are incident on the same mirror, what will happen is that they will be converged at a bit near point. ये थोड़ा सा करीब आएंगे, ये स्ट्रेट, okay. Now this point is a bit near, this is f dash. इसका मतलब है कि थिकर लेंस ने इसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज ज़्यादा है, ग्रेटर एबिलिटी टू कन्वर्ज. And what does it mean? It means that its focal point or focal length is small. So इसका मतलब यह है कि ability to converge or diverge has something to do with its focal length. ये focal length पे डिपेंड करेगा. इसको क्वांटिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स में हम चीज़ को फार्मूले में लाते हैं ना, ताकि एक ख़ास नंबर से हमें पता चले. हमने एक टर्म निकाला है विच इज़ कॉल्ड D, that is called power of lens. It is equal to 1 by focal length. So if focal length is less, 1 by focal length will be more and its power will be more. Okay. Remember that this power is not the power of energy per unit time. वो वाला पावर नहीं है कि हाँ मेरे में इतनी पावर है या मैं बहुत तेज़ी से एनर्जी
यूज़ कर सकता हूँ जिसके यूनिट होते हैं वॉट। फ्रिज की पावर, बल्ब की पावर, दैट इज़ नॉट दैट पावर, इट इज़ द कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस। एंड नॉर्मली जब हम लेंस लगाते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, जो चश्मे लगाते हैं हम एक दूसरे से हमेशा पूछते हैं कि ये चश्मा किस नंबर का है, और वो कभी कहता है कि 0.25 है, कभी कहता है 0.75 है। तो ये जो चश्मे की जो पावर होती है दैट इज़ एक्चुअली दिस नंबर, जो कि हम 0.25 या 0.75 कर देते। और जितने बड़े पावर का चश्मा लगेगा इसका मतलब ये है उतनी उसकी नज़र ख़राब है और उसको इतनी ज़्यादा पावर वाला लेंस चाहिए, उतना ज़्यादा लाइट कन्वर्ज करके दे दे उसको या डाइवर्ज करके दे दे ऑन द अदर हैंड। सो yes, this is all about this lecture. I tried to be short and concise. I can share this notes if you want. Yeah, this is all for today. See you tomorrow.